नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल, रजिस्टर्ड वैल्यूर इंस्टीट्यूट इन फाइनेंशियल एसेट्स and social. Today we shall discuss funding structure for profit enterprises. The existing fund structures are available for corporates, shall also be available for for-profit social enterprises. The funding structure discussed for NPOs may be used for funding फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज एज वेल। तो जो एनपीओज के लिए हैं वही फॉर प्रॉफिट्स के लिए भी आते। एफपी फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस में लिस्ट देयर सिक्योरिटीज ऑन द एप्रोप्रिएट स्टॉक एक्सचेंजेस, मींस दे कैन list their securities or debt securities on the main board. Debt securities may be listed on the main board. However, equity securities may be listed on the main board or small medium enterprises or innovative growth fund as the case may. So equity में उसके पास 3 ऑप्शंस हैं, जबकि डेट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है। There is a critical difference between for-profit social enterprises and for-profit conventional enterprises. The former will also be performing social impact reporting according to the minimum reporting standards. So, conventional enterprises सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, while profit for social enterprises प्रॉफिट के लिए भी काम करते हैं और सोशल एंटरप्राइज के लिए काम करते हैं। In other words, for-profit enterprises will have to demonstrate that they are in the business of creating positive social impact. So this is very important. So this will enable them to access a kind of capital that conventional for-profit enterprises do not have access to. यदि उनका पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट का इंटेंट है, सोशल एंटरप्राइज इसीलिए बनाने का इंटेंट है, चाहे वो फॉर प्रॉफिट भी क्यों ना हो, और समाज सेवा का उनमें मादा है, तो उनको वो फंडिंग स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं जो कन्वेंशनल फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस को नहीं है। So listing criteria will apply for profit enterprises just as they apply for profit conventional enterprises who list on the main board of the stock exchanges. तो मेन बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस पे जो डिस्क्लोजर्स, जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं वो यहाँ भी होते हैं। फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर एज फॉलोअर्स। A for-profit social enterprise may raise funds through issuance of equity shares on the main board, SME platform, or innovative growth fund, or equity share issued to an alternative investment fund, including a social impact fund. Means 5 हो गए: मेन बोर्ड, SME प्लेटफॉर्म, इनोवेटर्स ग्रोथ फंड, इक्विटी और एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इंक्लूडिंग सोशल इम्पैक्ट फंड। इशुएशन ऑफ डेट सिक्योरिटीज, ये डेट सिक्योरिटीज भी इशू कर सकते हैं, और एनी अदर मींस एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। SEBI has further clarified that securities issued for for-profit social enterprises shall be listed and traded under the applicable segment of social stock or segment of the social stock exchange with an identifier stating that the script is that of a for-profit social enterprise. Such for-profit social enterprise shall meet the eligibility criteria for the main board, the SME platform, or innovator growth fund as the case may be or as तो तीनों में से जिसके लिए भी वो एप्लीकेबल होगा वहां पर वह जाकर के लिस्ट हो सकता है। इक्विटी एंड डेट, द फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस विशिंग टू लिस्ट इक्विटी और डेट नीड्स टू शो इट्स ट्रैक रिकॉर्ड थ्रू सोशल परफॉर्मेंस। उसको एक ट्रैक रिकॉर्ड शो करना पड़ेगा कि वह सोशल परफॉर्मेंस कर सकता है। दैट विल अलाउ इन्वेस्टर्स टू गेन ग्रेटर इंसाइट इनटू द for-profit enterprises. The extent regulation for listing of equity or debt shall also be need to be followed.
If for-profit enterprises raise capital through equity or debt, they shall comply with existing stringent norms under securities laws and in addition shall have to comply with additional disclosure norms in respect of social. मतलब वो जहाँ लिस्टेड है, जो कन्वेंशनल फंडिंग है, जो लिस्टेड मेन बोर्ड और एसएमईज की नॉर्म्स हैं, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स, वो तो अपनाने ही हैं, उसके अलावा डिस्क्लोजर नॉर्म्स भी अपनाने पड़ेंगे जो सोशल इम्पैक्ट को प्रभावित करते हैं. In case of equity, the segment of listing shall also need to be considered, that is startup or innovator growth fund, SMEs or MEs. For profit enterprises shall list equity on the SSC subject to a set of listing requirements including operating practices, financial reporting and governance and social impact. In addition to this, for-profit enterprises listing equity debt shall comply with the disclosure requirements as per the applicable segment, such as main board, SME, or innovator growth fund. Now, what are the social impact fund or development impact fund? There shall typically be issued by an aggregator. ये aggregator भी आगे समझेंगे क्या होता है. For a specific target area. The issuer wishing to list such instruments shall need to show the impact areas and other relevant metrics such as impact expected and the expertise of the aggregator and other stakeholders in managing such projects. Social impact funds issued by alternative investment funds can invest 75% of their investable funds in unlisted securities or partnership interest of social ventures or in units of social ventures or in securities of social enterprise. So 75% of investable funds वो यहाँ पर invest कर सकते हैं. The remaining investable funds to be invested in securities of NPOs with prior consent of the at least 75% of the investors by value of their investment. So इस चीज के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसका ध्यान. These funds may accept grants which need to be only utilized in the above manner. So these are the sample questions. Which among the following is not an objective of the social stock exchange? Unlocking a large pool of social capital, listing funding channels, encourage blended finance structures, or providing a set of procedures and guidelines. You should say that यहाँ पर नोट है, इट्स ए नेगेटिव क्वेश्चन. सो यहाँ पर ओनली 1 and 3 जो है वो इसके ऑब्जेक्टिव नहीं है, जबकि दूसरा और चौथा इसके ऑब्जेक्टिव हैं, लिस्टिंग फंडिंग चैनल्स और प्रोवाइडिंग ए सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस. दूसरा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स स्टेकहोल्डर्स ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज? ट्रेडिंग मेंबर्स, non-profit organizations, or for-profit enterprises. So all are the stakeholders of the social stock exchange, whether these are trading members, non-profit organizations, or for-profit enterprises. तीसरा, the is measured by an independent third-party evaluator. तो third-party evaluators क्या assess करेगा? तो वो करेगा social outcome को. सोशल आउटकम को मेजर करेगा. द मिनिमम इश्यू साइज ऑफ 0.0 प्रिंसिपल बॉन्ड इज 1 करोड़. इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है, या तो ये 1 करोड़ वाला या 2 लाख वाला आ ही जाता है. सो दिस इज फॉर टुडे. वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो द रजिस्ट्रेशन एंड लिस्टिंग ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. हैव ए गुड डे.